Freelancing, freelancing, freelancing. I know you have heard it about a lot, but it's not just a trend. It's a skill-based career. And अगर तुम 2025 में freelancing नहीं करते हो, then you will miss out one of the biggest opportunities of this decade. And in this video मैं तुम्हें दूंगा एक road map कि कैसे start करना है, क्या सीखना है, how to get clients and many more things. Mindset shift. Freelancing is not easy money. It's a skill-based business. जिसमें तुम्हारी सक्सेस डायरेक्टली लिंक होगी तुम्हारी लर्निंग और तुम्हारे एफर्ट से. सो शिफ्ट योर माइंडसेट फर्स्ट बिकॉज यू आर नॉट एन एम्प्लॉय नाउ, यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, यू आर ए बिजनेस ओनर. पिक ए स्किल. सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना होगा कि क्या काम करोगे बिकॉज फ्रीलांसिंग में हर एक स्किल नहीं चलती. यू नीड टू लर्न ए हाई डिमांडिंग स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग. ये सभी स्किल्स हैं जो हर एक बिजनेस में यूज होती है. And good news, you can learn them for free. Learn smartly, not hardly. Don't fall into course trap because 30,000 के कोर्स लेने से पहले YouTube पे फ्री रिसोर्सेज का यूज कर लेना जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कोर्सेज की जरूरत है या नहीं. And to learn faster, you can use this simple method. Watch tutorials, at least 30 minutes. Watch a tutorial every day. Daily practice. Practice those projects जिसका तुम tutorial देख रहे थे. बिकॉज सिर्फ ट्यूटोरियल वॉच करने से तुम सीख नहीं जाओगे. एंड बिल्ड ए पोर्टफोलियो फ्रॉम डे वन बिकॉज ये तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे ग्रोथ को ट्रैक करने में. वेयर टू फाइंड क्लाइंट्स. अब स्किल आ गई है बट क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? वेल, क्लाइंट्स ढूंढने के लिए यू कैन यूज दिस सिंपल मेथड्स. यू कैन मेक योर प्रोफाइल ऑन Fiverr, Upwork, Freelancer एंड People Per Hour. एंड यू कैन ऑल्सो डायरेक्ट आउटरीच टू योर क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ Instagram, LinkedIn एंड कोल्ड ईमेल्स. जैसे Fiverr पे नीश बना के क्लाइंट्स को फाइंड करो लाइक Instagram रील एडिटर एंड Canva थंबनेल डिजाइनर. These can be the niche that you can use in your freelancing journey. एंड Instagram पे रील डालो showcasing your skill or showing behind the scenes or the result that you are getting for your clients. You can show them on your Instagram and get more clients. How to grow from zero. बिगिनर्स का सबसे बड़ा इशू यही होता है, ना तो उनके पास क्लाइंट्स हैं और ना ही एक्सपीरियंस. So, what is the solution for this? Well, you need to make free projects, 1 or 2 only for testimonials, and you need to upload your gigs on Fiverr, and you also need to upload your work on Instagram and LinkedIn, and you also need to learn sales and communication because freelancing में सिर्फ तुम्हें सीखना नहीं है, you also need to showcase your work. Income and scaling. Freelancing से 5,000 भी कमा सकते हैं और 5 लाख भी, depend on how you level up. Well, this is a step-by-step growth plan that you can follow. Niche down the category that you are getting into. Niche down the category that you are working on. You need to make a portfolio. You need to build a personal brand to get more clients. When you get more clients, then you can increase your prices. Depend on what type of quality you are giving them. When you get a lot of clients, then you won't be able to handle all of them. So you need to make a team or you need to create an agency that will help you into scaling the bar and crossing it. And इसी प्लान को फॉलो करके लोग 6 figure इनकम जनरेट कर रहे हैं. And if you use this, then you can also generate this type of income. Let's go, baby. Let's go.